बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हामिद अली फारूकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शहजाद। वेलकम टू HA व्यूज़ चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको HA व्यूज़ के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अली भाई यार क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा जा रहा है यार आपका आज का दिन? बहुत अच्छा, क्योंकि आज गर्मी बहुत कम है। कल बारिश हुई थी रात को, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हाँ जी, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इससे एक दिन पहले बारिश हुई थी और बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, जिससे मौसम में काफ़ी अच्छा, बिल्कुल बहुत प्यारा खुशगवार मौसम बन गया है। कल आप बारिश में नहाए थे? हाँ जी नहाए थे। अच्छा लो जी, बारिश में अली भाई नहाए भी हैं जनाब। यार मैं नहीं नहाया बारिश में, लेकिन मैंने इंजॉय ज़रूर किया है बारिश को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे, खैरियत से होंगे और सलामती से होंगे, सदा खुश आबाद और सलामत रहिए। अली भाई आज का जो हमारा वीडियो है ना जी, वो है ढाका चिटागोंग जो है ना कॉक्स बाज़ार रेलवे लिंक। ये एक 3D एनिमेटेड वीडियो है जी। और इसके ऊपर आज हम जाके देखते हैं कि ये कैसा एक प्रोजेक्ट है जो कि बनने जा रहा है या ज़ेर तामीर है। अगर ज़ेर तामीर है दोस्तों कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। तो आज का है जी हमारा ये वाला वीडियो रेलवे लिंक के हवाले से है, ढाका टू चिटागोंग कॉक्स बाज़ार रेलवे लिंक। और ये वीडियो कैसा होगा चल के देखते हैं आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप HA व्यूज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। Bangladesh is a dynamic, rapidly developing country, and the capital city, Dhaka, is linked to the major port city Chittagong by rail. The railway extends south from Chittagong to Dohazari, approximately 46 kilometers away. The country's premier tourist destination, Cox's Bazar, with the world's longest stretch of uninterrupted beach, is located about 150 kilometers south of Chittagong. There are many tourist attractions nearby, including Mamun Pagoda, St. Martin Island, beautiful destinations such as Nilgiri, Melech Hall and Golden Temple in Bandarban. Bangladesh's rapid economic growth and rising standards of living highlight the need for better connectivity to this premier tourist destination. Good infrastructure connectivity is a prerequisite for further economic development. ये shopping mall है। At present, the principal means of travel from Dhaka to Cox's Bazar is by car or bus, along congested roads. The trip to Cox's Bazar is a long and dangerous one, with a high accident rate. Bangladesh has one of the highest fatality rates in road crashes, higher than 73 deaths per 10,000 registered motor vehicles every year. There is a clear need for a safe, speedy, economical, comfortable, convenient means of travel between Dhaka and Cox's Bazar. ये वो रेलवे प्रोजेक्ट है। A new dual-gauge railway is planned to link Dhaka to Chittagong, onto Dohazari and Cox's Bazar and Ramu to Gandum near the Myanmar border. The trains will be able to travel from Dhaka via the Dhaka-Chittagong Express Railway, onto Chittagong and Cox's Bazar in 5 hours, compared to the current 12 hours. अच्छा, ढाका का और चिटागोंग का बहुत ज़्यादा सफ़र है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बहुत बड़ा ज़्यादा। क्योंकि मैप में देखा है एक साइड पे ढाका है और एक साइड पे चिटागोंग है। This single-line dual-gauge is provisioned for double line in the future. Local trains will also be provided, stopping at new stations to be provided at Dohazari, Satkania, Lohagara, Harbang, Charkaria, Dilohazara, Islamabad, Ramu, as well as at Cox's
Bazar. The planned expansion of the Bangladesh rail network, with linkages to the Padma rail link via the Dhaka-Chittagong Express Railway project, will permit double-stacked containers to and from Chittagong and the future deep-sea port at Meshkali, and permitting much faster travel times between Dhaka and Cox's Bazar. Emphasis will be on the broad gauge network, and regional and sub-regional connectivity, including Lasaka and Trans-Asian railway corridors, with linkages to India, Myanmar, China and other countries. The new railway from Dohazari to Cox's Bazar will permit a future connection to the proposed deep-sea port of Meshkali, with potential freight to be ये handled अच्छा to इंडिया and में from भी the deep-sea port. ट्रेन लाइन जाएगी। The railway नहीं, ये will also ढाका- provide for a ये future इंडिया में link नहीं from जाएगी। Ram to Ukiah and नहीं। Khartoum on the Myanmar border, with future connections to Myanmar, other Asian ये countries and the बांग्लादेश का अपना Trans-Asian प्रोजेक्ट है ना। railway. बिल्कुल। This linkage will enable the introduction of tourist passenger trains, offering a high level of service, convenience and comfort. The trains will be able to travel from Dhaka via the Dhaka-Chittagong Express Railway, onto Chittagong and Cox's Bazar in 5 hours, compared to the current 12 hours by car or bus. The trains will be air-conditioned, with reclining seats, on-board entertainment, and an on-board trolley service. बहुत अच्छी ट्रेन The है। rail journey will form part of an integrated tourist experience. The trains will have external advertising, and will serve as travelling billboards, with an exposure to millions of people along the Dhaka-Chittagong-Cox's Bazar rail corridor. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। Cox's Bazar trains will run as express trains, stopping only at ये तो Chittagong ढाका and से Cox's चिटागांग Bazar. इतनी लंबी ट्रेन लाइन बिछाएंगे वो। The Cox's Bazar rail terminal is designed to enhance the tourist experience, with an iconic building proposed in the ये form बिल्डिंग of a बहुत खूबसूरत clamshell, है। in keeping with बहुत the अच्छा डिजाइन बना हुआ है बिल्डिंग का। Cox's Bazar. Around the Cox's Bazar intermodal terminal there will be complementary development, including transport terminals, tourism-related developments, hotels, commercial and high-rise residential development. Passengers arriving at Cox's Bazar will be provided with convenient seamless transfers at the Cox's Bazar station, to cars, buses and other forms of transport to their final destinations. Social and environmental safeguards have been suitably addressed through investigations, extensive stakeholder consultations and हाँ जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे। mitigation measures. The project is being implemented at a capital cost of around $1.5 billion, and approval in principle for funding has been received from the Asian Development Bank. The new railway from Dohazari to Cox's Bazar and Ram to Khartoum will provide many benefits to the local region and the nation, including ये जो फायदे the होंगे arrival of over 26,000 passengers per day to Cox's Bazar, improving the connectivity between Dhaka, Chittagong and Cox's Bazar, providing increased mobility options for passengers, providing a safe, secure, speedy, convenient, comfortable, economic, sustainable and reliable transport link for tourists and the general public, providing employment opportunities for local बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। during the बहुत फायदे होंगे लोगों को operations and maintenance phases, providing a catalyst for establishment of a future deep-sea port at Meshkali, boosting the economic development of the region from Dohazari to Cox's Bazar and to Teknaf, providing a vital transport infrastructure link to connect with Myanmar to facilitate sub-regional and regional trade. Construction of this line is equivalent to 0.5% of GDP. ये कोक्स बाजार बसेस टॉप क्लास बसेस।
थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये था अली भाई आज का वीडियो। बहुत अच्छा था वीडियो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत कम वक्त में हाँ सफ़र जी अली करेंगे। भाई, इससे ये होगा ना कि इससे इस रेलवे लिंक के बनने से जी शुरू में हमने देखा कि रोड्स के ऊपर रश की वजह से बिल्कुल। सम टाइम हादसात भी हो जाते हैं, हादसा बिल्कुल हादसात भी हो जाते हैं, उन हादसात से भी बचा जा बचा सकेगा जाए, बिल्कुल और लोगों को आमदोरफ्त में आसानी भी हो आसानी भी जाएगी, होगी। उनका सफ़र कम वक्त में बिल्कुल अच्छा और महफूज सफ़र बिल्कुल। गुजरेगा। तो दुआ करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट आमीन। हो। दोस्तों अगर तो ये प्रोजेक्ट जारी है और ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है उसका भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बिल्कुल। बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। बहुत जल्द मैं और अली भाई इंशाल्लाह इसी तरह का एक अच्छा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अंटिल देन कीप अस इन योर स्पेशल प्रेयर्स, टेक केयर ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।